Okay, so hello everybody, good morning and welcome back to the EduphoreIAS, the Hindu live class. Today the date is 12th of August and we are starting first as usual with the questions. Fine. So सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीलिम प्री एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन की, किस फॉर्मेट में क्वेश्चन आ सकता है तो हम देख लेते हैं क्विकली एंड आफ्टर दैट विल बी डिस्कसिंग द टुडेज हिंदू. ठीक है, तो सबसे पहले आई होप कि आप लोगों ने सॉल्व करने की कोशिश जरूर की होगी. ठीक है, तो what should be the correct answer for this question? Quickly, the question is, first statement, the Mekong Ganga Cooperation was established in the year 2000. It comprises 5 member countries, namely India, Thailand, Myanmar, Laos and Vietnam. Yesterday I told you about that this is not, this grouping is not of 5 members, rather 6 members. India plus 5 of the South Asian nations. And among them, we have Laos, Vietnam, Thailand, Myanmar and Cambodia. So one is missing here and that is Cambodia. Cambodia Angkor Wat Temple. Known for, famous for Angkor Wat Temple. Okay, so Cambodia is missing here. Therefore, statement 2 is wrong. Statement 1 wrong. It's a factual one, but it's correct. Third is the areas of cooperation are basically tourism, culture, education, transportation and communication. So even third is correct. So we are left with just 1 wrong, 2 correct, means only 2 pairs correct. Second is wrong, first and third you're correct. ठीक है, so therefore answer is B. अब हम बात करते हैं जो आपने आंसर्स लिखना था उसके. तो क्वेश्चन जो है that is, why is China experiencing deflation while other countries grapple with rising inflation? So this is the kind of contradictory, you can say, or paradoxical kind of situation we are at present experiencing with respect to China and let us say India or majority of the emerging or developing or developed nations, even including the US. Therefore, you see that in the past, just 2 days back, while the MPC, that is Monetary Policy Committee of the RBI, has not just kept the repo rate unchanged, but also raised the inflation expectation by 30 basis points. Fine. So therefore, somewhat you see this paradoxical situation. But on the other side, if you see the inflationary trend in China, this is on a declining side, means deflationary trend is being generally noticed in China. Fine. While inflationary in India, you can see the tomato has become more spread over the time. Okay. So therefore, what exactly the question is, what exactly the reasons why so that on the one side majority of the countries are facing inflation while China is facing deflation. So what might be the reasons? First, the question is about why is China experiencing deflation while other countries grapple with rising inflation. First of all, you need to define what is deflation, what is inflation, and what is deflation. Fine. So deflation is generally understood as fall in the price of goods and services in economy, and the vice versa is, that is, when there is general rise in price of goods and services in economy, you call it inflation. So just in one single line you need to define, in 2 lines of course, so separately, first deflation, then inflation, or inflation and deflation, you need to define them, the term itself, and after that we'll be moving to the question why it is a kind of deflationary situation in China. And you can give examples, certain examples to substantiate your point that yes, the other parts or the majority of the nations of this globe are actually facing inflation. उसमें आप इंडिया के एग्जांपल दे दो, यूएस के एग्जांपल दे दो, आप मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 2 दिन पहले डिसीजन आई है उसकी एग्जांपल दो, उसकी इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन आरबीआई की क्या है उसकी दो, बिकॉज उसको 30 बेसिस पॉइंट से रेज किया है. सो अगर इन्फ्लेशनरी ट्रेंड नहीं अगर नहीं होता ऐसा तो ऑफ कोर्स आरबीआई इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन को बढ़ाती नहीं, कम करती रादर. फाइन. तो क्यों हुआ है ये सारा कुछ समझते हुए, प्लस फेडरल रिजर्व ने भी अपने कुछ रेट्स टाइटन किए हैं. सो इसका भी ध्यान आप इन एग्जांपल्स को कोट कर सकते हो while you are focusing on the inflation part, rising inflation in the other parts of the world. Fine. Now coming back to the deflationary situation in China, so what might be the reason? So first come first, let us start first with like consumer prices in China have experienced a decline
with the consumer price index dropping by 0.3%. Means with this single fact, you are substantiating your point that yes, what you are saying or whatever has been mentioned in the statement of the question itself is being justified. Fine. Second thing that you can mention is China's experience of deflation contradicts the global trend, as its central bank has maintained low interest rates to boost demand. It could be indicative of deeper underlying issues beyond just liquidity storage or shortage. फाइन सो चाइना में एक हमारे को डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशन देखने को मिल रही है. क्रेडिट बूम है बिकॉज ऑफ पीपल्स बैंक ऑफ चाइना है जिसने पॉलिसी रेट ऑलरेडी कम कर दिए थे. सो लोगों के हाथ में पैसा तो है बट दे आर एक्चुअली नॉट डिमांडिंग. द रीजन बिहाइंड डिफ्लेशनरी सिचुएशन इन चाइना इज not the money or the liquidity crunch, but real issue is, or more fundamental reason is somewhat the demand is not coming from the people, fine, from the consumers, you can say. So therefore major the issue, the core reason behind deflationary situation in this China is demand, this tepid demand, you can say, shortage of this on the part of demand side. Further, what are the reasons? So further reasons, you see the property sector, especially the real estate sector in China, which is a significant contributor to the Chinese GDP, has been undergoing turmoil even before the pandemic sets in. Fine. So these are the various reasons. But of course, China is a communist state and a kind of totalitarian state where one party just ruling the country, and very less kind of information that you can extract from China. Fine. So बड़ा ही closely operate करता है. So public domain में इतनी knowledge नहीं होती, information available नहीं होती. So the best thing that we can find why actually China is facing the deflationary trend is, another could be like, for that we need to have more deeper study, you can say proper study of the Chinese money supply and monetary transmission can help us come to a definite conclusion on the reason behind the current bout of deflation. Fine. So this could be your final concluding remarks or conclusion. This is where you can leave your answer. Fine. So again, following the same structure, IBC, intro, body and conclusion. This is how you can structure your answer. Fine. So that's it about the yesterday's question. Now let us start with the today's Hindu. Okay. So 12th of August. First page or the front page, Center 6 to overhaul British criminal laws. So the focus is on reforming the British era criminal laws, basically IPC, CRPC and the Evidence Act. Fine. One by one, Indian Penal Code IPC 1860 will be replaced by Bharatiya Nyaya Sanhita BNS. Criminal Procedure Act 1898 will be replaced by Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita. And third, that is Indian Evidence Act 1872 will be replaced by Bharatiya Sakshi. Sakshi is basically evidence. Sakshi Hindi for evidence. So therefore, you see all these three acts were actually, this introduced by the Britishers only. See the years 1860, 1898 and 1870 means all the three belongs to 19th century. Fine. Of course, the later half of the 19th century. Okay, so far this is the focus of the government. All these three, that is IPC, CRPC and Evidence Act to be amended. Other proposals include death for mob lynching. Mob lynching हमने पहले भी बात की है, जहाँ पे group, it's a kind of illegal killing of, let us say, person by masses or mobs. Fine, group of persons. So therefore it is called mob lynching. 10-year jail for physical relations on the false promise of marriage, in fact, and repeal of section on sedition. So many of the cases you see today, that is having physical relations on the basis of fake promises for marriage. So 10 years of jail term has been provided under this Amendment Act for such kind of this crimes. And then repeal of section on sedition. Sedition Act is already there, already under suspension by the Supreme Court, and therefore now this section is going to be repealed, but in this place government is going to insert another section in the CRPC itself. Fine. So what are these? See,
Government says sedition law has been repealed, but section 150 of the BNS, that is Indian Penal Code, Bharatiya Nyaya Sanhita, deals with the offense. It does not use term sedition, but describes the offense as endangering sovereignty, unity and integrity of India. So this has been rephrased, ठीक है, एंड सरकार सेडिशन देशद्रोह की जगह पे इन 3 वर्ड्स को इंसर्ट किया, सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया. फाइन. तमिलनाडु के सीएम ने ऑब्जेक्ट किया है टू हिंदी नेम्स ऑफ द बिल्स. ठीक है, ओके, दैट्स इट. Delimitation, EC, Election Commission of India renamed some seats in Assam. तो कुछ लोकसभा के एंड स्टेट असेंबली के सीट्स हैं, जो नंबर ऑफ जो फिगर्स हैं एक्चुअली एब्सोल्यूट फिगर उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, सिर्फ सीट्स की नेम जो है वो चेंज की है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इन असम आफ्टर डिलिमिटेशन ऑफ असेंबली सीट्स इन असम. ठीक है, सो उसको हम ट्रैक कर लेंगे ऑन पेज 14 itself. चलो quickly let us have a look at the city page from Delhi. So not that relevant. If you are from Delhi, you should be aware of what's going around you, otherwise you can safely skip these pages. And then you have the city again, and again not that important, more or less politics only. Then you have lots of ads, safely skip them. Then you have a states page, and you see demolition drive in Nuh, Haryana government dismisses ethnic cleansing charge. So more or less the news is about Nuh and all. Okay, rest news is about politics more or less. Okay, then another states page, you have again politics only from the southern states. Yes, Luna 25 will not affect Chandrayaan 3. Russian Space Agency Roscosmos. तो रशिया की जो स्पेस एजेंसी है रॉसकॉस्मोस, उसने भी लॉन्च किया है द लूना 25 ऑन फ्राइडे, एंड इट्स लैंडिंग ऑन द मून वुड नॉट impede India's Chandrayaan 3. Why so we are discussing this? Because this Luna 25 mission of Russia is also going to be going to land on moon on the same date, that is August 23, on which we are expecting our Chandrayaan 3 to be making soft landing on the surface of the moon. Fine. As the two missions had different landing areas and there was enough space on the moon for everyone. So areas different, of course, though date is same. So therefore Russia has said clearly that there was enough space on the moon for everyone. Fine. And our lunar mission is not going to interfere in any case with Indian Chandrayaan 3 mission. Fine. Okay, so this much is because landing area जो है, जो surface है जहाँ land करने वाले हैं दोनों missions, वो different है, so there is no chance of any accident like situations. Okay, NGT National Green Tribunal ने ओडिशा को ये कहा कि stop illegal construction near तमपारा लेक. So तमपारा लेक है कहाँ पे, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए, that is in Odisha. And one important fact about Tampara Lake is that it has been designated as Ramsar site under Ramsar Convention. Fine. And it is one of the largest picturesque freshwater lakes of the state of Odisha. तो आपको इतना ही पता हो कि टम्पारा लेक है कहाँ, इसको रामसर साइट की डेजिग्नेशन मिली है नहीं मिली है. So this much is important. Okay, next. Rest is politics. Okay. Finally, this is the editorial page of today's Hindu, and again the page, the first main lead article is related to demolition Raj, and more or less this is in with the context of Nuh, what happened in Haryana, and post that demolition drive by the government, and the High Court stopped this. Punjab and Haryana High Court put a stop on this demolition drive, and therefore the writer is somewhere praising this move of High Court or appreciating the move of High Court. And that's why he's saying High Course acts as a beacons. Of course.
not that need to go into that. So the only important article from this editorial or opinion page today is India needs a new economic policy, written by one of the most, you can say, renowned figures, and Subramaniam Swamy itself. He is the former Union Minister of Commerce and Law and Justice. I think majority of us are aware of who is he. Fine. So the NSO has finally come up with the data, released the 2020-23 GDP fourth quarter growth rate figures. So 23 financial year की जो fourth quarter है, that is from fourth quarter is from yes Jan, Feb, March. Okay. So measured against fourth quarter figure of the previous year, of course we compare, remember GDP figures on, अगर क्वार्टर की बात करें तो फोर्थ क्वार्टर के हम फिगर को कंपेयर करेंगे क्वार्टर फोर्थ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022, रिमेंबर. फाइन. तो इस तरह से कंपैरिजन होती है, आइदर क्वार्टरली बेसिस, आइदर मंथली बेसिस, मंथली तो नहीं, मोर और लेस क्वार्टरली बेसिस, और एनुअल बेसिस भी आप कंपेयर कर सकते हो, बट हमेशा बेस जो होगा वो प्रीवियस ईयर एनुअल केस में एंड प्रीवियस क्वार्टर के केस में होगा, रिमेंबर. He is saying the data give a gloomier picture than what the media publications of Press Information Bureau present. According to NSO data, in the first COVID-19 pandemic quarter of 2021, that is April 1 to June 30, GDP growth rate was minus 23.8% when compared to GDP of the same period in 2019-20. So first quarter अगर हम बात करें post COVID-19, especially in the 2020-21, comparing this figure with the 20 and 19 and 20, this was because सबको पता है कि वर्ल्ड ओवर मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज की जो ग्रोथ थी, जीडीपी ग्रोथ, वो नेगेटिवली हमें देखने को मिला था, नेगेटिव टर्म्स में. तो इंडिया की भी दैट वाज माइनस 23.8% ये फिगर थी. वहां से फिर ये ड्रॉ करते हैं कि 3 conclusions can be drawn on the basis of the NSO data since 2014-15 for because these are important for reality check. First is the growth rate of GDP since 2015-16 had been declining annually and has fallen in the fourth quarter to what it was earlier, and seemingly referred by economists as the Hindu rate of growth. 3.5% growth rate in GDP. Even कि रघुराम राजन जी ने भी कहा था, and in fact सबसे पहले Hindu rate of growth है क्या? So Hindu rate of growth is basically it talks about the GDP growth of India between the period 1950, let us say, till 1977-78. Fine. And average growth rate of India during that time period was somewhere in the range of 3.5%. This was called Hindu rate of growth. Remember, this has nothing to do with Hindu per se, but it was coined by one of the economists, Professor Raj Krishna. Okay? Professor Raj Krishna. So he was an economist who coined this term, Hindu rate of growth. Okay? Second reason behind this, second conclusion that we can draw is, it is essential to recognize that since 2014, the current Prime Minister has widely publicized Vikas in reality achieved the so-called Hindu rate of growth in GDP of what had been achieved. तो कह रहे हैं कि सेकंड कंक्लूजन ये हम ड्रॉ कर सकते हैं कि जो करंट प्राइम मिनिस्टर है, इन्होंने काफी बार विकास की बात की, बट एक्चुअल में जो विकास की गति है वो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ के सिमिलर है, कि ग्रोथ जो है जीडीपी वो समवट 3.5-4% से ग्रो कर रही है. Third conclusion that we can draw is, during the tenures of former Prime Ministers P.V. Narasimha Rao and Dr. Manmohan Singh, GDP growth rates rose for the first time to between 6% to 8% per year over 15-year period, that is between 1991-96 and 2004 to 2014. Fine, with the usual cyclic ups and downs. So during the prime ministership of these prime ministers, this P.V. Narasimha Rao and Dr. Manmohan Singh, GDP growth actually was were in the range of, you can say, 6 to 8% for the continuous 15 years. ठीक है, नॉट कॉन्टिन्यूस, बट 96 से 2004 का पीरियड जो है वो वाजपेयी गवर्नमेंट का, वो अगर निकाल दें तो पहले, तो दिस इज द स्टोरी. Okay, so what is alarming today is the serious and continuous decline in the GDP growth rate, which began in 2016. And that decline continues even now. The current government has failed to structure economic policy coherently and which has prevailed during the period. तो टोटली अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं करंट गवर्नमेंट की जो कह रहे हैं कि इकोनॉमिक फ्रंट पे सरकार फेल हो गई है, ठीक है, एंड
through the GDP figures, he actually wants to substantiating his point or validating his point. So next is the growth rate of GDP has been consistently in decline since 2016. Fine. But there are also brazen announcements of rosy predictions being published annually in the media. सबसे बड़ी जो claim, that is 5 trillion GDP by 2024 announced in 2019. बट ये कह रहे हैं कि अगर हम इस फिगर को अचीव करने की बात करें इन रियल टर्म्स, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी अगर इंडिया बनना चाहता है बाय 2024, तो उसके लिए हर हाल में हमें 15% की एनुअल ग्रोथ करनी होगी. मींस 15% से जीडीपी जो है इंडिया की वो ग्रो करनी चाहिए इन द नेक्स्ट. ऑफ कोर्स वी आर लेफ्ट विद जस्ट 1 ईयर. फाइन. सो अभी हम समवॉट $3.2 ट्रिलियन की इकोनॉमी है एंड वहां से $5 ट्रिलियन जाने के लिए हमें 15% की कॉन्टिन्यूसली ग्रो करना पड़ेगा इस रेट पे. नाउ व्हाट कुड बी द स्टेप्स. यहाँ तक तो इन्होंने ये गिना दिया कि क्या इश्यूज है, ठीक है, और कहाँ पे सरकार फेल हो गई है. नाउ व्हाट कुड बी द स्टेप्स अकॉर्डिंग टू हिम, व्हाट कुड बी द सॉल्यूशंस और द वे फॉरवर्ड. सो by structuring, he is saying, I mean a clear implementation of what the economic objectives will be and priorities that should be assigned to the various objectives. ठीक है. So clear cut objectives defined हो, plus implementation front पे जो है वो clarity हो, plus alongside that जो priorities है सरकार की वो भी clear terms में defined हो. This is the first solution. Second, thereafter there ought to be a strategy on what should be incentivized and what should be deleted or discontinued. So second is related to incentivization and deletion. नेक्स्ट इज एग्जाम्पल भी देते हैं कि फॉर एग्जाम्पल इन टूडेज डार्क इकोनॉमिक कंडीशन इट इज एसेंशियल दैट पर्सनल इनकम टैक्स इज अबॉलिश्ड and goods and service tax GST is scrapped to incentivize investors and earners. Now these are very extreme examples. He is talking about abolishing income tax and GST both. तो आप सोच सकते हो कि is it feasible or not. Next is resources by the government should be mobilized through indirect taxes and also by liberal printing of currency notes which is circulated by paying wages to employment generated in he is focusing more on indirect taxes, but one of the nature or the characteristics of indirect taxes that they are generally regressive in nature, means they put more burden on the poor people. So how come it's possible कि आप एक साइड बात ये कर रहे हैं कि आप डायरेक्ट टैक्स जो कि गुड माना जाता है बिकॉज प्रोग्रेसिव इन नेचर उसको स्क्रैप करने की बात कर रहे हैं, जीएसटी को हटाने की बात कर रहे हैं, दूसरी साइड कह रहे हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स सरकार लगाए so that की मोबिलाइजेशन हो सके फाइनेंसेस की. Apart from that, the annual interest rate paid on fixed term savings in bank accounts should be 9% or so to increase purchasing power of the middle class. ठीक है, एक ये की लॉजिकल सॉल्यूशन लग रहा है, बट इसमें भी इशू ये है कि 9% सरकार नहीं कर सकती, बट ऑफ कोर्स इट कुड बी इंक्रीज समवेयर इन द रेंज ऑफ 8%, 7 to 8%. So this one is quite valid. Interest rates on loans to small and medium industries should be not more than 6% of the loans to increase production of this sector. तो दोनों तरह की लोन की बात करें कि डिपॉजिट पे है जो फिक्स डिपॉजिट्स पे उस पे भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाए एंड जो बोरोइंग कॉस्ट है उसको 6% से कम रखा जाए फॉर द इंडस्ट्रीज, क्रेडिट बोरोइंग एंड लोन्स. सो India needs a new economic policy urgently. It needs to be a policy that is based on clear objectives, priorities, and have a strategy to achieve the defined goal. So this could be another solution. And then as far as the finance ministry is concerned, we have only incoherent public announcements. The market system, next he is talking about the market system, is not a free for all or an ad hoc measure. It has a structure with rules for transactions. Market system, especially capitalism, works as the principal drivers are incentive and capital. ठीक है, सो कहते हैं कि कैपिटलिज्म जो है वो रन ही करता है इन दो प्रिंसिपल ड्राइवर्स पे, दैट इज इंसेंटिव्स एंड कैपिटल. बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट इन द सेंस दैट is capital actually being used for innovation which raises factory productivity and growth rate of GDP. तो इसलिए ये important है. Even totalitarian state, totalitarian means absolute power जहाँ पे single party rule होती है basically. ठीक है, for example चाइना के आप example ले सकते हो, mention भी है. Such as China understood this during the tenure of Deng Xiaoping as the supreme or the founding father of China. It allowed the socialist economic system to die and an economic market-based system came in.
So even China is not totally communist or you can say socialist country today, but somewhat in between. I mean you can say the mixed one. Now deregulation should also not mean that we reject government intervention. तो ये भी अच्छी बात है कि कह रहे हैं कि डीरेगुलेशन, जैसे आप देखो कि कुछ पेट्रोल प्राइसेस हैं सरकार डीरेगुलेट कर देती है, इंटरेस्ट रेट्स भी इंडिया में डीरेगुलेट किए गए कि सरकार जो है वो मार्केट मैकेनिज्म पे छोड़ देती है रेगुलेशन, आई मीन लेट अस से दिस regulation of let us say prices of petrol and all, or even defining the interest rates. So deregulate कर दिया उसको, regulate से deregulate. Affirmative actions, market failure and creating a level playing field is important in this sense. That's why we need government intervention for affirmative action, for preventing market failure and for creating a level playing field. Democratic institutions have to be empowered to guard against public disorder arising from rapid deregulation. ठीक है, so democratic जो institutions हैं उनको भी empower करने की जरूरत है, उनको strengthen करने की जरूरत है, so that they would be able to put some safeguards against public disorders that is arising from rapid deregulation. As it happened in Russia post 1991, Russia experienced chaos and misery after this deregulation. Now the trade-off क्या है? Trade-off between the public sector and deregulation and the sale of loss-making units, increasing employment through affirmative action and easy access to social security. Now trade-off is means where one situation is not applicable, let us say, with respect to the two different objectives. So trade-off means between the public sector and the deregulation and the sale of loss-making units. So देखोगे जैसे एयर इंडिया को गवर्नमेंट ने सेल कर दिया, सेल आउट कर दिया बिकॉज इट वाज अ लॉस मेकिंग पीएसयू. इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट, सो यहाँ पे तो है ही है कि पब्लिक सेक्टर में डीरेगुलेशन भी कर रही है सरकार, साथ में अगर एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी बढ़ानी है, ठीक है, कंसिडरिंग आवर डेमोग्राफिक डिविडेंड, एंड देयरफॉर समवॉट वी हैव ट्रेड ऑफ बिकॉज कुछ सिक यूनिट्स भी हैं जिसको हम हार्डवर्क कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल बीएसएनएल है वन ऑफ देम, जिसको कि अभी भी सरकार जिंदा रखने की कोशिश कर रही है, ठीक है. दिस क्रिएट्स अ लेवल प्लेइंग फील्ड इन अ कॉम्पिटिटिव सिस्टम, इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रस्टीशिप एज वेल एज कॉर्पोरेट गवर्नेंस टू लेजिटिमाइज प्रॉफिट मेकिंग स्मूथली व्हिच ड्राइव्स द मार्केट सिस्टम. सो दीज आर द benefits, or he is in favor of governmental intervention for all this purpose. Apart from that, such steps reduce monopolistic tendencies. Competition Commission of India you can see इसलिए बनाया गया कि monopolistic tendency जो है इंडिया में उसको ब्रेक किया जाए, ठीक है, plus and help in the formation of democratic and harmonious society. So this is why the role of government is important. Fine. So he is in favor of course governmental intervention. Chalo. Next you have sunshine. Okay, not that important. So now we'll be having some miscellaneous facts from the prelims exam point of view. This here, complete politics. So छोड़ दो. Okay. Politics related to monsoon session only. किसको निकाला गया, किसको, going on, blame game. Further you see, this is important. Parliament paves way for 28% GST on online gaming. So online gaming आप लोग भी खेलते होगे online games, तो उस पर अब गवर्नमेंट ने फाइनली पार्लियामेंट से वो हो गई है पास बिल कि ultimately now government is going to impose 28% GST on the face value of all bets made in casinos, horse racing and on online gaming. So these three things, ठीक है. द अपर लिमिट जो हमारी जीएसटी के अंडर 28% वो लगाई जाएगी इन तीनों पे. नेक्स्ट यू से यस, असम डिलिमिटेशन, EC renames some seats in its final report, ठीक है. तो डिलिमिटेशन के बाद, डिलिमिटेशन बेसिकली इट्स constitutional provision under Indian Constitution. A committee is being set up for delimiting the constituted this states assembly seats basically, or let us say Lok Sabha seats as well for general election purpose. Fine. This committee is basically appointed by the President of India. ठीक है. सो ये असम में ऑलरेडी हो चुका है. उसके बाद एक चीज ध्यान रखना कि जो एब्सोल्यूट नंबर ऑफ सीट्स हैं फॉर कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली और एंड लोकसभा, उसमें कोई चेंजेस नहीं लाए गए हैं. इसके बाद भी जनरली हम ये मानते हैं कि डिलिमिटेशन के बाद सीट्स कुछ है जो
बढ़ाई जा सकती है, ठीक है, कंसिडरिंग द दिस पॉपुलेशन। ओवर द टाइम अगर पॉपुलेशन बढ़ इंक्रीज हो रहा है तो ऑफ कोर्स हमें सीट्स भी बढ़ानी पड़ेगी सो दैट कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मिल सके सबको, ठीक है, बट ऐसा नहीं हुआ है। हुआ क्या है फिर, चेंजेस क्या है इसके बाद, तो ऑल टुगेदर 19 असेंबली सीट्स अप फ्रॉम 16 अर्लियर एंड 2 पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज हैव बीन रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है। तो पहले शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, एसटीज के लिए असम में जो रिजर्व सीट्स थी दैट वर 16 सीट्स फॉर स्टेट असेंबली एंड 2 फॉर लोकसभा, and now this has been raised from 16 to 19. Similarly, SC के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए seats has increased from 8 to 9, एक सीट इनकी भी बढ़ाई गई है, while the SC tag has been removed from the करीमगंज लोकसभा सीट and given to the adjoining सिलचर, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नेम चेंजेस की गई है, ठीक है, इसमें जाने की जरूरत नहीं है, देयर आर n नंबर ऑफ सी, सबका ही नाम दिया हुआ है यहाँ पे, तो उसको करने की जरूरत नहीं है। एक जो न्यू चीज़ है वो मानस असेंबली सीट, एक न्यू नेमिंग जो है वो मानस जो एरिया है, मानस टाइगर रिजर्व, यू कैन से मानस नेशनल पार्क, उसकी उसको भी एक असेंबली सीट दी गई है, नेम्ड आफ्टर मानस नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो दैट्स इट अबाउट दिस। हाँ, इशू अब यहाँ पे है, सेंटर डिफेंस यूज ऑफ वसुधैव कुटुंबकम इन G20 लोगो एज चाइना ऑब्जेक्ट्स। चाइना ने ये कहा है कि वसुधैव कुटुंबकम जो कि एक संस्कृत वर्ड है, टर्म है, ठीक है, कि कहीं भी यूएन की संस्कृत जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे यूएन की पहली बात की लैंग्वेज नहीं है, इसलिए इसको ऑब्जेक्ट किया है चाइना ने, ठीक है, और कुछ नहीं मिला तो यही सही। तो सो इंडियन गवर्नमेंट ने इसको डिफेंड किया है, डिफेंडिंग द यूज ऑफ द संस्कृत टर्म वसुधैव कुटुंबकम व्हिच मींस द वर्ल्ड इज वन फैमिली इन इस G20 लोगो। ये हमारा लोगो जो है इंडिया के सिंस प्रेसिडेंसी है G20 की इस बार इंडिया के पास, नेक्स्ट मंथ सबमिट होने वाला है, तो इसी यहाँ पे लिखा हुआ है वसुधैव कुटुंबकम, बट इसके नीचे भी एक इंग्लिश में वर्ड लिखा हुआ है, वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, ठीक है। So Ministry of External Affairs said it uses only the English version of the phrase one earth, one family and one future in its summary documents, ठीक है। तो इस लोगों की वजह से कुछ परेशानियां हैं चाइना को, बट सिर्फ चाइना ने इसको रेज किया, रिमेंबर, इवन रशिया ने भी कुछ नहीं कहा इसके बारे में। चाइना को वैसे दिक्कत है, काफ़ी दिक्कतें हैं, ठीक है। The clarification came after reports in the media said China had objected to the use of non-UN language like Sanskrit in any of the G20 texts being negotiated. क्योंकि जो वर्किंग लैंग्वेज है G20 की दैट इज इंग्लिश, फाइन। But the theme of India's G20 presidency in English is one earth, one family, and this is based on our civilizational ethos of Vasudhaiva Kutumbakam, which has received widespread support and permeates many of the initiatives that India has brought onto the G20 agenda, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ जो ऑब्जेक्ट किया है वहाँ पे चाइना को, और भी चीज़ें जिसे दिक्कत है वो ये, Chinese delegation have taken a more confrontational stance over several phrases introduced by the Indian G20 Sherpa team, ठीक है। शेरपा क्या होती है, शेरपा इज बेसिकली अमिताभ कांत जी हैं। सो शेरपा इज बेसिकली अ पर्सन हु एक्चुअली टेक्स केयर ऑफ ऑल दिस ऑर्गेनाइजेशन, फाइन, ऑन बिहाफ ऑफ द हेड ऑफ द यू कैन से गवर्नमेंट, बिकॉज इंडिया में प्राइम मिनिस्टर। So these include language on the promotion of millets, lifestyle for environment, that is life initiative proposed by our prime minister, and even terms like gender-led development, which the Chinese delegation claimed was supplanting UN agreed language for SDGs or Agenda 2030. तो इन चीज़ों पे इशू है, बिकॉज इंडिया की जो स्ट्रेचर है वर्ल्ड लेवल पे बढ़ रहा है, ठीक है, बट ऑफ कोर्स चाइना सीज इंडिया एज अ कॉम्पिटिटर, ठीक है। सो जहाँ भी मौका मिलता है वहाँ पे ऑब्जेक्शन रेज करता रहता है चाइना, ओके। तो अब आपकी जो दूरदर्शन है, जो डीडी है, डीडी ऑल सेट फॉर अ मेकओवर विद फ्रेश प्रोग्राम्स, रीजनल एंड ओटीटी फोकस। सो अब आपकी दूरदर्शन पे भी आपको सीरीज एंड ओटीटी दिस सीरीज आपको देखने को मिलेंगी, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स लाइक प्लस न्यू मूवीज। तो देखो एक सीरीज लॉन्च भी होने वाली है जहाँ चांद रहता है, दिस इज बेस्ड ऑन द कल्पना चावला जर्नी टू दिस स्पेस, ठीक है। This is a good thing that Doordarshan is actually updating its the changing time.
नेक्स्ट इज जून इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्लोज टू 3.7%. सो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में जो है वो गिरावट देखने को मिली है बाय 3.7%, स्लोज टू 3.7%. ठीक है, फ्रॉम मेज रिवाइज 5.3%. तो कहीं ना कहीं हमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रही है. मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ स्टम्बल्स अमिड फॉल्टरिंग कंज्यूमर गुड्स डिमांड. सो चाइना में भी डिफ्लेशन वाली हमने जो बात की थी कि डिमांड नहीं है, इस वजह से देखने को मिल रही है. तो इंडिया में भी यही सिनेरियो है, कुछ कंज्यूमर गुड्स में डिमांड की कमी है. ठीक है, जिसकी वजह से हमें इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है 3 मंथ लो फिगर हमें देखने को मिल रही है. ठीक है, widening slowdown industrial growth is due to the slowest pace in the 3 months as manufacturing weakens on account of tepid consumer demand. Tepid is lukewarm kind of. ठीक है, consumer durables which had recovered to post its first uptick in 6 months in May shrank 6.9%. consumer durable goods, consumer durables में demand कमी है. as many as 14 of 23 manufacturing sectors contracted in June. ठीक है, मई में 12 में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिली थी. इस मंथ में, पिछले महीने में हमारे को जून में स्पेशली 14 में देखने को मिली है. ठीक है, तो IIP इज बेसिकली इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एक्चुअली मेजर्स द growth rate of, you can say, the industrial sectors, different industrial this groups actually. ठीक है, the base year for IIP is 2011 and 12 and this is released on monthly basis by CSO, Central Statistics Office, IIP. ठीक है, तो इतनी चीजें IIP के रिगार्डिंग याद रखना. डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो है वो देखने को मिली है रोज बाय 17.3%. ठीक है, इन अगस्त, एज ऑफ अगस्त. दिस इज अ गुड न्यूज, पॉजिटिव न्यूज. इंडिया फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग MDBs, दैट इज मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स, in order to address shared global challenges set by our honorable finance minister. Next, world news. चाइनीज मिलिट्री शिप जो है फिर से डॉक कर रही है एट कोलंबो पोर्ट एंड लास्ट टाइम भी जस्ट एग्जैक्टली 1 year प्रायर टू दिस एज वेल, मीन्स लास्ट ईयर चाइना की एक वॉर शिप जो थी वो डॉक कर रही थी कोलंबो पोर्ट पे. एंड इसकी वजह से इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में कुछ टेंस्ड डिप्लोमेटिक टेंशन हमें देखने को मिली थी. ठीक है, एंड फिर से ऐसा कुछ हो रहा है. बट ये श्रीलंकन डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि इंडिया इज फुली अवेयर ऑफ द वेसल्स विजिट एंड हैज नॉट एक्सप्रेस्ड एनी कंसर्न ओवर इट. वी आर ऑन द सेम पेज, says by Sri Lankan Defense Ministry. But what has been said by India? तो इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन है अरिंदम बागची जी, उन्होंने ये कहा है कि आई एम अनश्योर इफ इट इज अ वॉरशिप और नॉट. फर्स्ट ये, the government carefully monitors any development having a bearing on India's security interests and takes all necessary measures to defend them. ठीक है, तो इसकी वजह से लास्ट टाइम जैसा ना हो, इंडिया के एंड श्रीलंका के आपसी रिलेशन ज़्यादा खराब ना हो, इसलिए कम्युनिकेशन जो है वो ओपन है. एंड श्रीलंका ने ये कहा है कि इंडिया अवेयर है इस चीज़ को लेकर के. फाइनली यू हैव दिस स्पोर्ट्स पेज. फाइनली yes, so that's it as far as today's Hindu analysis is concerned. Fine, Saturday को generally weekend mood में भी हिंदू भी होता है. ठीक है, so you see, but before that let us have a look at questions from today's analysis. तो आज के लिए होमवर्क जो है आपका, that is 2 questions. Again you can see first is related to the IIP index of industrial production. ठीक है, तो ये क्वेश्चन है. First statement is IIP is a measure of the rate of growth in the economy's various industry groups over a given period of time. Second is Ministry of Commerce Industry computes and publishes the IIP index, and currently the IIP index is calculated using 2010-2011 as the base year or base period. So you need to choose the correct pairs among these 3-4 options. Next, another question is related to the G20. ठीक है, जो हमने डिस्कस किया with respect to China's objection. तो इसमें भी 3 स्टेटमेंट्स हैं आपके. फर्स्ट इज G20 was formed in 1999 in the backdrop of the financial crisis of the late 90s. It aims to secure global financial stability by involving middle income countries. And last statement is Italy, Indonesia and India are the Troika. Troika means 3 countries, 3 members
राइट नाउ एंड इंडिया होल्ड्स द करंट प्रेसिडेंसी। सो इसको भी आपने 4 ऑप्शन से करेक्ट मार्क करने हैं। दिस इज योर होमवर्क फ्रॉम द टुडेज हिंदू एनालिसिस। इसको हम मंडे को डिस्कस करेंगे, ठीक है। So that's it from my side. If you have any query, anything, you can put this in the comment section. Until then, take care, keep revising, and stay tuned for Hindu analysis. Thank you.